Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about inguinal hernia, which is basically the protrusion of the loop of intestine through the inguinal wall or inguinal canal. ठीक है. अब basically the inguinal hernia is of two types. One is the indirect inguinal hernia, also called as the oblique inguinal hernia, and the other one is actually the direct inguinal hernia. Talking about the indirect inguinal hernia, इसमें क्या होता है कि जो प्रोट्रूजन होती है दैट अकर्स आइदर थ्रू द डीप inguinal ring or through the inguinal canal or through the superficial inguinal ring into the scrotum. And what is the reason for the descent of this loop of intestine into the scrotum? That is because of the patency of the processus vaginalis as occurs in hydrocele. This mostly occurs in male infants. It occurs in male infants and children. ठीक है, and this has a very narrow neck of the hernial sac. ठीक है, ऑब्वियसली वो सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग से फंसता फुसता निकल रहा है इनटू द स्क्रॉटम. सो आमतौर पर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बोल इज़ कॉमन. ठीक है, जबकि जो आपका डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है दैट अकर्स इन द ओल्डर मैन एंड दैट इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इन एनलार्ज्ड प्रोस्टेट. ठीक है, यहाँ पर आपकी जो प्रोट्रूजन होती है ऑफ द लूप ऑफ इंटेस्टाइन दैट अकर्स थ्रू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इनग्वाइनल कैनाल और थ्रू द हैसलबैक ट्रायंगल. सो इट हैज़ अ वाइडर नेक ऑफ द हर्नियल सैग एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बोल इज़ नॉट वेरी कॉमन. ठीक हो गया. Now let's talk about the boundaries और क्या उसे कहते हैं the coverings of this indirect inguinal hernia. तो indirect inguinal hernia में the first thing starting from inside to outside, सबसे पहले we will be having the extraperitoneal tissue that is associated with the loop of intestine. ठीक है, ये जो पिंक में शायद शो कर रहे हैं. उसके बाद विल बी हैविंग द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया. ठीक है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया के बाद विल बी जो ग्रीन में आ रहा है नज़र. ठीक है, इसके बाद विल बी हैविंग दिस क्रीमास्टैटिक फेशिया शोन हेयर इन blue, and then we'll be having this external spermatic fascia, and then we'll be having an outer covering of the skin. ठीक हो गया. जबकि डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया जो होता है दैट अकर्स टू द हैसलबैक ट्रायंगल. ठीक है, एंड आई नीड टू टेल यू द डायमेंशंस ऑफ द हैसलबैक ट्रायंगल फर्स्ट. This triangle shown here in yellow is the Hasselbalch triangle, which is between the lateral wall of the rectus abdominis, the inferior epigastric artery, ठीक है, and the inguinal ligament. ठीक हो गया. तो ये आप क्या कह सकते हो कि बेसिकली ये आपकी है प्यूबिक सिम्फाइसिस. तो इस प्यूबिक सिम्फाइसिस के इतनी ऊपर है. ठीक है, जस्ट इन द फ्रंट और इन द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. ठीक है, और ये वाला जो आपका ट्रायंगल है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू अ मीडियल एंड अ लैटरल हाफ बाय एन ऑब्लिटेरेटेड अम्लाइकल आर्टरी. ठीक है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज़ द मीडियल अम्लाइकल लिगामेंट. ठीक है, सो इस तरीके से वी एक्चुअली डिवाइड दिस डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया इनटू अ मीडियल डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया एंड अ लैटरल डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया. Before discussing the coverings of the medial and the lateral direct inguinal hernia, let's talk about the comparison of the direct and the indirect inguinal hernia. So as I've already mentioned that the indirect inguinal hernia is because of the patency of the processus vaginalis, whereas the direct inguinal hernia is because of the weakness of the posterior wall of the inguinal canal. As I've already mentioned that the direct inguinal hernia occurs in older men and is precipitated by chronic bronchitis and enlarged prostate. ठीक है, and on standing this direct inguinal hernia, ठीक है, on standing the direct inguinal hernia does not come out. On standing the direct inguinal hernia comes out, but the indirect inguinal hernia does not come out because वो तो आपके इस स्क्रॉटम के अंदर कहीं फंसा फुसा है. ठीक है, इट हैज़ नो वे टू गेट आउट. ठीक है, ठीक है, वो निकल भी नहीं सकता. लॉजिकली इट कैन नॉट इवन कम आउट बिकॉज इट हैज़ नो वे टू कम आउट. विद दिस इट विल कम आउट ऑन स्टैंडिंग एंड इट कैन बी फेल्ट आउटसाइड. ठीक है, ये तो खैर ये भी फील किया जा सकता है बट दिस कैन इवन बी मोर क्लोजली पैल्पेटेड. ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ द सैक इन केस ऑफ इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया द सैक इज एक्चुअली कमिंग आउट थ्रू द डायरेक्ट इनग्वाइनल and through the superficial inguinal ring where here it is coming out from the Hasselbalch triangle. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ that the obstruction of the bowel is not very common because the neck of the hernial sac is not that narrow. It's rather wider than the indirect inguinal hernia where the neck of the hernial sac is very narrow. So there is more chances of obstruction of bowel. Now let's talk about the coverings of the lateral and the medial direct inguinal hernia.
This shown over here is actually the Hasselbalch triangle. This is the lateral border of the rectus abdominis. Here we have the inferior epigastric artery, and above we'll be having the inguinal ligament, thus making up the Hasselbalch triangle. Now this this Hasselbalch triangle is actually divided by the inguinal ligament, ठीक है, inguinal ligament कह रही हूँ, by the obliterated umbilical artery, ठीक है. तो अगर हम बात करें अबाउट द लैटरल एंड द मीडियल की कवरिंग्स ना, तो दिस बेसिकली यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है कि दिस पार्ट इज़ एक्चुअली द मीडियल एंड दिस पार्ट इज़ एक्चुअली द लैटरल, ठीक है. द कवरिंग्स आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है. बस यहाँ पे क्या होता है, इन द केस ऑफ द मीडियल वील बी हैविंग द कॉन्जॉइंट टेंडन, वेयर इज इन द लैटरल वन विल बी टॉकिंग अबाउट द क्रीमास्टेरिक मसल. The rest will always be having the extraperitoneal connective tissue, the fascia transversalis, ये ब्राउन में जो शोन है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्रीमास्टेरिक मसल और विल बी हैविंग द कॉन्जॉइंट टेंडन, ठीक है, इन द मीडियल साइड, ठीक है. हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन होगा, देन विल बी हैविंग द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया एंड अल्टीमेटली द स्किन. ठीक हो गया.